the Yes. कंपाउंड से। the compound the portion। तो अभी बताओ कि कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स है क्या? So when two or more elements combine with each other, they are called compounds. Two or more elements combined with each other, then it is compound. So two or more elements when it combining with each other, then it will combine in any ratio or in a fixed ratio. In a fixed ratio. In a fixed. Fixed ratio. Okay. So, as we know, the definition that is compound is it is the combining form of two or more elements in a fixed ratio. Okay, fixed ratio means that is fixed proportion of mass. Like if we take example, suppose we are taking water compound, most simplest. So in water, hydrogen is to oxygen. Hydrogen here two element and oxygen here two element. This is the ratio of elements. If we will go to the mass, then mass of two hydrogen is 2, mass of one oxygen is 16. So simplified form is 1:8. This is ratio of mass. And if we take water molecules from anywhere, then this ratio of mass is being fixed. Okay. If we take water from river, from sea, from well, from tap well, anywhere, the ratio of elements is fixed. That is known as compound. The two or more elements when combining with each other in a fixed ratio, then it forms compounds. Okay. Nextly, this these compounds can be classified into so many types. Out of that, most important are, as we will discuss it in your class 10, that this compound is divided into three parts, that is acid, base, and salts. Okay. Now acid. So what is acid? We have read in class 7. At first we have, Yes. okay, we have read in class 7. So acid means the substance which sour in taste. This definition we have read in class 7, that acid means sour substance, and base means the substance which is
Bitter in taste. Bitter in taste. Now, remember one more definition that will be discussed in your class 10 when acid base and 10 salt chapter will come. That the substance which is release or donate H plus ion, H plus ion in aqueous medium. This is aqueous medium. Okay, the substance which donate H plus ion in aqueous medium is known as acid. Similarly, the substance which donate the substance which donate OH minus ion in aqueous medium is known as base. You have to write full statement. Okay, acid means H plus donor, base means OH minus donor. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जब 10 में आ रहा तब टोटल डिटेल्स हम लोग देखेंगे. और salt is something the compound. Salt is some compounds which are formed by the reaction between acid and base. एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट. ठीक है, सपोज अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अब सॉल्ट में भी बहुत टाइप होते हैं. ठीक है, वो हम लोग बाद में आएंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, वो जब आएगा चैप्टर तब देखा जाएगा. अब फिलहाल एसिड बेस सॉल्ट. एसिड का एग्जाम्पल क्या हुआ देखो. देखो, acid means H plus donor. That means the substance must contain H, मतलब hydrogen. The acids are HCl, H2SO4, HNO3, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. We have already read in class 7. Acetic acid, etc. बहुत ऐसे भी एसिड मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी वो एसिड है. क्यों एसिड है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बेस क्या है, बेस का एग्जाम्पल, base is OH minus donor. That means it contains OH. So NaOH, KOH, MgOH whole 2, etc. ये सारा हुआ base. Salts reaction between acid and base. So suppose acid takes HCl, base takes in NaOH, then the salt form NaCl plus water. So NaCl is the salt, common salt, which we use daily in our cooking. Okay, so this is compound. Now, as we discuss the characteristics of elements, we have to discuss the characteristics of compound too. So compound का जो characteristics है वो भी क्या है, बहुत हद तक एलिमेंट से चला ही होता है. ठीक है, तो हम डिस्कस कर ले, तुम लोग लिखते चलो. हेडिंग करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. यहाँ तक नोट डाउन हो गया पहले सबका. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर, डन. अच्छा, तो हेडिंग करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट पॉइंट लिखो, बताए. Yes, sir. यस सर. फर्स्ट पॉइंट लिखो, in compound constituents are present in compound
constituents are present in a fixed ratio of their mass. In compound, constituents are present in fixed ratio of their mass. Next point. The properties of compound are different from the properties of its elements. Properties of compounds are different from the properties of its elements. Look at here. हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग होता है, Cl का प्रॉपर्टी अलग होता है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग होता है, बट वाटर का प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो है उनसे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से डिफर करेंगे। थर्ड पॉइंट, constituents of compound cannot be separated by simple physical process. Constituents of compounds cannot be separated by simple physical process. Next, compound has a fixed melting or boiling point. Compound has a fixed melting and boiling point. सर फोर्थ पॉइंट ठीक से सुनाई नहीं दे रहा सर। Compound has a fixed melting and boiling point. ओके सर। Next, compound is always homogeneous in nature. Next point, formation of compound is accompanied with formation of solution is accompanied with evolution of heat. सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट करिए ना। Formation of compound is accompanied with evolution of heat. Accompanied with evolution of heat.
हुआ? Yes. Yes, sir. हाँ तो चलो कंपाउंड हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर। नेक्स्ट मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मतलब कंपाउंड क्या हुआ मेरा? कंपाउंड हुआ combining form of two or more elements in a fixed ratio. So mixture also consists elements and sometimes compounds too, but in any ratio. Okay, in any ratio, and they are not chemically combined together. Like here, they are chemically combined, but in mixture they are not chemically combined. Okay, in any ratio when elements and compounds mix in with each other, elements, more than one elements or more than one elements or more than one compounds, or elements and compounds both, but in any ratio and not chemically compound, just mixing with each other, then it is a mixture. Okay, Please repeat it again. I told mixture state. Mixture means थोड़ा राइट में खींचे ना सर, mix, huh? थोड़ा राइट में, Right. हाँ पेज, I'm telling that mixture is a substance in which it consists more than one element or compounds or both, not in a fixed ratio, not in a fixed ratio, and they are not chemically combined. मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे या फिर एक से ज्यादा कंपाउंड रहेंगे या एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों रहेंगे, बट कोई फिक्स्ड रेशियो में नहीं रहेगा और वो दोनों केमिकली कंबाइंड भी नहीं रहेंगे। अब केमिकली कंबाइंड का क्या मतलब होता है? केमिकली कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है, आपस में कोई नया कुछ नहीं फॉर्म हो रहा है, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। दैट इज नोन एज नॉट केमिकली कंपाउंड combined. Like here, hydrogen and Cl are chemically combined with each other. Hydrogen, sulfur, oxygen are chemically combined with each other. But in mixture, if this and this will mix, they will not chemically compound. Suppose if this and this will mix, they are not chemically combined. If they will chemically combine, then this is not mixture. That will be new product.
ठीक है। जैसे मान लो हम लोग मिक्सचर मतलब मान लो शरबत बनाते हैं, तो शरबत में हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर वाटर के साथ केमिकली कंबाइन नहीं होता है। एज वी नो वाटर molecules having some free space inside it, so sugar molecules just trapped in those vacant space, okay, but not they chemically combined. Salt too, when we are adding salt in water, then salt will again trapped in those vacant space. It will not chemically combine. Okay. Now this mixture is two type. So, Yes. sir, if we will put oxygen and hydrogen together in a place and they are not in a fixed ratio, then what Mhm. is that? Compound or mixture? They will react with each other, no? If they will react means they will chemically compound. Sir, we are not keeping them in a fixed ratio. Then, Mm, doesn't matter if we not placing in the fixed ratio, but if they will react, then it will not be mixture. But if they will not react, then it will be mixture. We are not thinking in a fixed ratio. Suppose we take here hydrogen and oxygen. Okay. If in any ratio. But we know that hydrogen and O2 reacts with each other to form water. If they will form water, then we can't say this is mixture. But if they don't, then it is a mixture. Okay. If in सर any ratio, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट करता है? नहीं नॉर्मल में नहीं, इसको रिएक्ट करके वाटर बनाने के लिए हम तो बाहर से एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, हाई प्रेशर एंड कुछ अलग फैक्टर्स। ठीक है Okay, सर। नॉर्मल में sir. तो नॉर्मल में तो एयर में भी है, तब तो वो वाटर फॉर्म तल जाना चाहिए था, बट नहीं करता है ना। ठीक है। Yes, sir. तो अब हम लोग देखते थे मिक्सचर से हम लोग टाइप देते थे। The mixtures are two type, that is homogeneous and homogeneous and heterogeneous। देखो यहाँ पर सिर्फ समझाए गए, होमो का मतलब क्या हुआ, सिंगल या फिर सेम, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। और हेटेरो का मतलब हुआ डिफरेंट। जीनस वर्ड स्टैंड्स फॉर स्टेट। होमोजेनस मिक्सचर मीन्स सिंगल स्टेट मिक्सचर, heterogeneous mixture means different states of mixture। Okay, now what is this single state and different state? We are going to elaborate। Note down हो गया all of you? yes, sir. यस सर। Yes, sir.
तो टेबल बनाओ, लेफ्ट में होमोजीनस, राइट में हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर लेफ्ट में लिखो और हेट्रोजीनस तो राइट में लिखो। पहले एग्जांपल्स देते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। किसको होमोजीनस बताएंगे, किसको हेट्रोजीनस बताएंगे। दे तो सपोज हम लोग ये 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ये बीकर ऑफ वाटर है, इसमें हम लोग बाहर से 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। दिस इज सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर व्हाट विल बी विजिबल? हम लोग क्या देख पाएंगे इसके बाद? सिर्फ वाटर, The safe water. सिर्फ वाटर, सॉल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। नाउ इफ वी टेक हियर एग्जांपल्स ऑफ this is water, and suppose in this we will add some clay from outside, we will put in some clay. So after the mixing we can see that water, some amount of clay is depositing at bottom, some will mix with the water and make it dirty. Okay, so here after the mixing the substance which are adding is not visible. After the adding, the substance which we are adding after this is not visible. But here the substance which are being added is visible after the mixing. So this type of mixture where actually mixture contains two substances, water and salt, but only one substances is visible. But here all the substances are visible. Okay. So when one substance is visible is known as homogeneous, and all the substances are visible then it is heterogeneous. Now if we see this solid, this mixture, then we can see water from every position, but here water and sand, but sand is not present or clay is not present everywhere. Clay or sand is deposited at the bottom. Okay, so here two kind of state is present, one water state and second is clay state. Okay, two state, but here overall single state is present because salt after mixing it forms a single state, but here different state is present. Okay, समझ में आया? Now homogeneous में क्या हो रहा है? The substance which are being added is completely mixing with that substance in which it is added. So they completely mixing, but here not completely mixed. Some amount is depositing. Okay, means some amount of substance is being separated, spread throughout the substance. Okay, this is known as heterogeneous mixture. मतलब जहाँ पर substances properly mix हो जाएंगे एक साथ, यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। यूनिफॉर्मली मीन्स ये सिंगल स्टेट फॉर्म करेगा। यूनिफॉर्म हम तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ही स्टेट दिखाई दे रहा है लिक्विड, बट यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है, सेपरेशन है, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस।
समझ में आया? So homogeneous का definition क्या होता? The mixture in which substances are mixed with each other uniformly to form a single transparent state. बहुत टाइम ट्रांसपेरेंट भी होगा, ठीक है। सिंगल ट्रांसपेरेंट स्टेट इज नोन एज homogeneous mixture. And here the mixture in which substances are mixed with each other non-uniformly and they are being separated, spread out over the mixture, okay, is known as heterogeneous. Is known as heterogeneous mixture. लिखो न्यू आईडी पासवर्ड के लिए वेट करना है, न्यू आईडी से फिर लॉगिन करना है ये मीटिंग ओवर होने के बाद। और ग्रुप में प्लीज शोर नहीं मचाना है, बहुत शोर करते हो तुम लोग, इतना इम्पेशेंस क्यों हो जाते हो? आर बीइंग सेपरेटेड का बात क्या लिखे है? Are being separated from a spread out over the mixture. ओके सर। नेक्स्ट देखो, इसमें जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हुआ है, they cannot be they are indistinguishable by our naked eye, but here the substances are mixing or mixed up, they are distinguishable by our naked eye. हम लोग खाली आंखों से इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बस इसको देखते ही समझ में आएगा कि इसमें कुछ और सब्सटेंसेस मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, substances which are mixed with each other indistinguishable are indistinguishable from one another, but here substances which are mixed with each other are not indistinguishable.
या फिर हमें लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट वेरिएबल जो सुटेबल लगे लिखो।